Let's start with Introduction to Partnership. See, Indian Partnership Act 1932, the definition is mentioned in section 3. So what is partnership? Read carefully the definition. A relationship between whom? A relationship between two or more persons who have agreed. And what is the agreement? Who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. So now again, partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share profits. Means when profits is positive, loss is negative. So they have agreed to share profits as well as losses, and they carry on the business. How will that profits or losses come? The profits will come because they agree to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. So one partner can become representative to other partners, and business can be carried by a one partner or all of them, or single one partner acting for all the other partners. So let's move further. Think that you are the accountant of a partnership firm. So you need to know first what is partnership, then we'll do what is partnership deed, and then lastly how will you plot the accounts. What is partnership deed? So partnership deed is an agreement between partners. Very important. Partnership deed is an agreement between partners. Why do you need to make an agreement? To avoid problems or conflicts in future. We take everything in black and white. The list or the terms and conditions. Once a partnership deed is signed, it is binding on the partners. So it is the list of terms and conditions. It is an agreement between the partners. Now let's move on. What are the contents of a partnership deed? एक partnership deed में लिखा क्या क्या जाता है? So contents of a partnership deed. So first, name of the partnership firm. So see, whenever a child is also born, we give the child a name. So when a partnership firm comes into existence, उसको नाम तो दोगे ना कि XYZ जो भी है partnership firm. So name of partnership firm, common name, it is the common name for all the partners. Say XYZ are 3 partners, उनका partnership firm. So XYZ के लिए common name क्या है? Partnership firm का नाम. So first name of partnership firm is written in the partnership deed. Now principal place of business. There must be some place where they carry on their business. So address होना चाहिए कि ये partnership जो है उसका business कहाँ है. So address is important. Now third is nature of business. So what are you going to do after all that will give you profit, or the activity from which you expect profit? What are you going to do? Nature of activities of business, whether you will be a retailer, a wholesaler, a manufacturer or a service provider. What is the nature of your business? Now fourth point, personal details of partners. So where to find you? What is your name? What is your father's name? Your age, your address, your occupation. Everything will be mentioned in the partnership deed under head
पर्सनल डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, आपको ढूंढना हो तो ढूंढेंगे कहाँ? सो पर्सनल डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रीड द डेफिनेशन. There is an intention to share the profit. So, profit sharing ratio is important. Equally share करेंगे. 1:2:3, 5:3:2. If there are 3 partners, what will be the ratio in which you will be sharing the profits? पहले से डिसाइडेड है तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ओके. ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस. How long the business will be carried. Generally, normally it is at will. Means that till any partner does not want to dissolve the business keeps continuing. Okay. But if it is limited period partnership, जैसे ही वो limited period, वो time over होता है, the partnership comes to an end. Or if the partnership is for a certain project, when that project is over, the partnership comes to an end. But generally the partnership is as will, that is until any partner calls off to dissolve the partnership, it goes on and on for years. Okay. Now next point, percentage of interest on drawings. Okay. ड्रॉइंग करते हैं, दैट मीन्स यू टेक आउट द मनी फ्रॉम द बिजनेस. सो टू डिस्करेज दैट, देयर मे बी अ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. सो लेटर ऑन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड में यू कैन स्पेसिफाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ये रेट होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Same way, see I'll give you an example. There may be 2 partners, A and B. Now A is investing 10 lakhs in the firm, whereas B is investing only 7 lakhs. So A will say that I am investing 3 lakhs more. So if I put that 3 lakhs in the bank, I will get some interest. So मुझे वो interest partnership firm से मिलना चाहिए. If there is an interest mentioned in the deed, then there is less chances of conflict. So interest on capital can be a point mentioned in the partnership deed. Next is signing authority. Who will sign the accounts? Who will be allowed to operate the bank accounts of the partnership deed? So वो भी लिखा हो यदि पार्टनरशिप डीड में, इट इज इजियर. नाउ अदर पॉइंट्स कैन बी कैपिटल. हु विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द पार्टनरशिप फर्म. अदर पॉइंट कैन बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हु विल मेंटेन, हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन कैन बी एन अनदर पॉइंट. अनदर फर्दर पॉइंट कैन बी गुडविल ऑल्सो. कितना गुडविल होगा, वो कैसे आएगा, दैट कैन बी अनदर पॉइंट. So these are important small points which form the contents of a partnership deed. And see, now we come up to registration of partnership deed. Is it compulsory to register? The Act says that it is not compulsory to register a partnership deed, but Act creates a limitation. So to avoid those limitations, it is always better to register your partnership deed. For example, if you want a PAN card in name of the partnership firm, then PAN card मिलेगा ही नहीं if the deed is not registered. So if you want a PAN card, you have to register your partnership deed. We'll move further. Let's understand what is reconstitution of partnership. See, reconstitution of the firm and partnership हम इस presentation में समझेंगे. Whenever there is a change in terms of agreement, यानी कि हमने जो पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट था उसमें चेंज हुआ. सो
टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में जब चेंज होता है बिटवीन पार्टनर्स, इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स कुछ क्लॉज जो वो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखे थे या अनरिकॉर्डेड थे, जैसे भी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट उनमें चेंज हुआ तो इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ व्हाट चेंजेस कैन बी देयर, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सी, एक फर्म है, से देर आर ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स, उसमें उन्होंने डी को एडमिट किया, सो एडमिशन ऑफ द पार्टनर हुआ तो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट चेंज हुए। अब डी का भी शेयर होगा प्रॉफिट में, वो भी कैपिटल लाएगा। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंजेस एंड सो द फर्स्ट सिचुएशन इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, admission of a new partner. Second situation, let's see A, B, C, D 4 partners थे, उसमें से D retire हो गया, so again terms of agreement will change, so again that will lead to reconstitution of partnership. So second is retirement. Third is death of a partner. डेथ हुआ तो भी वापस से टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे एंड देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ फोर्थ इज बिना किसी एडमिशन, रिटायरमेंट के या डेथ के ऐसे ही द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, यदि चेंज होता है तो भी अग्रीमेंट में चेंज, सो देयर इज दैट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, यदि देयर इज चेंज, कैपिटल में चेंज होता है तो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज करके रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके। व्हेन अ पार्टनर से एक एडमिशन होता है तो हम न्यू रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है, रिटायर होता है, जो या तो विलिंगली रिटायर होगा या डेथ के कारण वो छोड़ के जाएगा, सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। सो व्हेन अ पार्टनर लीव्स द पार्टनरशिप कंसर्न, ही इज कॉल्ड एज रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। और जब अंदर आता है एक नया पार्टनर तो उसको हम बोलते हैं न्यू पार्टनर। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो बाकी पार्टनर्स बचते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रिमेनिंग पार्टनर्स और द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ द कंसर्न। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हेन द फर्म इज रीफॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द partnership firm.